Hello everyone, can all of you hear me? Yes, sir. Okay, so this would be a practice session for some advanced level questions and the questions that you might generally, kind of questions that generally appear in the advanced exam. Right? So we'll get directly to that. Okay, before that, I guess all of you have been briefed on how to and what to go expect and how to deal with the advanced exam. I think Varun sir has discussed that in the previous session. So in that case, I'll not be going into those things. We'll directly start solving questions. Okay. So the questions that we are going to do are going to be some conceptual and slightly difficult calculation questions because that's what the advanced focuses on. So right on. Question number one. Integral minus 1 by root 3 to 1 by root 3 cos inverse of 2x by 1 plus x squared plus tan inverse of 2x by 1 minus x squared whole divided by e power x plus 1 dx. So to solve for the value of this, थोड़ा सिंपल ट्रिक का क्वेश्चन है. Which is like if you have tan inverse of 2x by 1 minus x squared is equal to sin inverse of 2x by 1 plus x squared. या x को tan थीटा डालेंगे तो ये पूरा सिंप्लीफाई होके 2 tan inverse थीटा बन जाएगा. And 2 tan inverse theta can be written as sin inverse of 2x by 1 plus x square x plus tan theta. तो ये आ जाएगा tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta, which is tan inverse of tan 2 theta, which is 2 theta, which is 2 tan inverse x, and 2 tan inverse x would be sin inverse of 2x by 1 plus x square. तो ये हो जाएगा cos inverse of 2x by 1 plus x square plus sin inverse of 2x by 1 plus x square by e power x plus 1 dx. But sin cos inverse plus sin inverse of the same thing हो गया pi by 2. So pi by 2 and then ये हो जाएगा 0 to 1 by 3 1 by root 3 fx 1 by e power x plus 1 plus f of minus x e power x by e power x plus 1 dx. This will give us pi by 2 root 3 as the answer. Question 2.
if fx plus 0 to x tft dt plus x square is equal to 0 for all x, find fx. तो इसको डिफरेंशिएट करो। We have f dash x plus x fx plus x square plus 2x is equal to 0, which is basically like writing dy by dx plus xy is equal to minus of 2x. ठीक है, LDE हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power integral x dx to e to the power x square by 2 will have y into e to the power x square by 2 is equal to integral of minus of 2x e to the power x square by 2 dx। तो इसमें x square by 2 को t डाल लो, x dx dt हो जाएगा। तो विल हैव इट एज -2 इंटीग्रल x dx dt हो गया और e to the power t dt। तो y into e power x square by 2 will be equal to minus of 2 e to the power x square by 2 plus some c। अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा? We go back to the equation. If in the equation we put x equal to 0, तो तो 0 to 0 इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ 0 विल बी 0। तो यहाँ पे वापस से प्लग इन कर दो, x इक्वल टू 0 पे y विल बी 0, which will give us the value of t as t। ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू t का वैल्यू 2 ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 2 e to the power माइनस ऑफ x square by 2 है ना, -2। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस, दैट विल बी fx। नेक्स्ट क्वेश्चन, let
k belongs to a natural numbers, and sk is defined as sum of infinite GPs, sum of infinite GPs with the first term as k square minus 1 and the common ratio as 1 by k. Then find summation k going from 1 to infinity s of k by 2 to the power k minus 1. Sk is sum of infinite GPs with the first term being k square minus 1 and the common ratio being 1 by k. तो इसमें सबसे पहले sk क्या हो जाएगा? Since it's an infinite GP with a as this and r as this, so sum of the GP a by 1 minus r, so this would come out to be like k into k plus 1. Okay. So now the required sequence that we have, summation k going from 1 to infinity sk, so k into k plus 1 by 2 to the power k minus 1, ये बन गया, which is like writing if you put k as 1, so 2 plus k as 2 would be 2 into 3 by 2, k as 3 would be 3 into 4 by 2 cube, 2 square. तो इसमें x1 तो होगा नहीं ना, क्योंकि x1 तो 0 हो जाएगा, 2 से शुरू होगा ये। देखो, if the a is defined as k1, so s1 के लिए k would be 1, which implies a would be 0. So if a is 0, the entire sequence will become 0 for s1. K will be 1, which would imply a is 0. Therefore s1 will be 0. तो ये जो सीक्वेंस है ये 2 से शुरू होगा. The summation will start from 2, not 1. So 2 into 3 by 2, 3 into 4 by 2 square, 4 into 5 by 2 cube, and dot 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 dot. ऐसे चलेगा ये.
So in that case, अब how do we solve for the value of this sequence? So suppose तो इसको एक sequence ले लिया s infinity, which is 2 into 3 by 2 plus 3 into 4 by 2 square plus 4 into 5 by 2 cube plus dot dot dot. So whenever a sequence has a GP component, तो उसको method of solving में we use different series. So half into s infinity is equal to, इधर से लिख के शुरू करेंगे, तो 2 into 3 by 2 square plus 3 into 4 by 2 cube dot dot dot, subtract कर दो, तो this will give us half s infinity is equal to, ये वाला टर्म तो 3 हो गया, प्लस, अच्छा 3 into 4 2 into 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 4 minus 2 2, 2 into 3 by 2 square, which would be like a 3 by 2, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, 5 minus 3 फिर से 2 आ जाएगा, एक 2 कॉमन होके ये हो गया 4 by 2 क्यूब, प्लस नेक्स्ट वाले में भी सेम होगा, यहाँ पे 5 6 होगा, यहाँ पे 4 5 होगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, 6 minus 4 2 हो जाएगा, एक 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 by 2 पर 4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी. So now if you look at the sequence from here onwards, ये वाला part, what does this end up becoming? AG, AGP. ये एक infinite AGP हो गया. What is the sum of an infinite AGP? What will be sum of the infinite AGP? AB by 1 minus R plus BDR divided by 1 minus R whole square. I hope all of you remember this formula. Sum of an infinite GP. Infinite AGP, where A is the first term of the AP part, B is the first term of the GP part, R is the common ratio of the GP part, and D is the common difference of the AP part. ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो अब. फर्स्ट टर्म ऑफ द AP part हो गया 3, फर्स्ट टर्म ऑफ द GP part would be 1 by 4, and the common ratio is half. So 3 into 1 by 4 by 1 minus half plus B 1 by 4 into 1 into half by 1 minus half का square. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो. 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, 2 ऊपर चला गया, ये तो आ जाएगा 3/2 प्लस, ओके ये हो जाएगा हाफ का 1/4 1/4 1/4 कैंसिल होके ये आ जाएगा हाफ, तो 3/2 प्लस हाफ 2.
बट पूरा एक जीपी एक टू से भी मल्टीपल, क्या? सर और एक टू से भी मल्टीप्लाई होगा पूरा एक जीपी। और एक हाफ से मल्टीप्लाई होगा पूरे एजीपी? नहीं सर, टू से ऊपर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर ए का वैल्यू 3। सर कॉमन लिए थे ना, टू एक ठो, 3+2 इंटू जो एजीपी का वो आया सम। हाँ ठीक है। वही मतलब एडजस्ट कर देना। राइट राइट, जो 2 सबसे कॉमन निकाला था, सही बात है। ठीक है, 3 कॉमन लेके 4 माइनस 2 2 2, हाँ सही बात है, 2 एक कॉमन निकाला था सर। हाँ तो ये अब यहाँ पे चला जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, एस इंफिनिटी का वैल्यू आ जाएगा 14, दैट विल बी द आंसर। बट इज एवरीवन क्लियर विद द क्वेश्चन? Okay, next question. If y is tan inverse of 4x by 1 plus 5x square plus tan inverse of 2 plus 3x by 3 minus 2x, find dy by dx. कैसे वैसे बोले, if dy by dx is alpha by 1 plus beta square, beta x square, let's reframe the question this way. If dy by dx is defined as alpha by 1 plus beta square, find the value of beta by alpha. Find beta by alpha. Y is tan inverse of 4x by 1 plus 5x square plus tan inverse of 2 plus 3x by 3 minus 2x. If dy by dx is alpha by 1 plus beta x square, find beta by alpha. So this would be like y equal to tan inverse of 4x को कर दिया 5x minus x by 1 plus 5x into x plus tan inverse of, अच्छा यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 2 by 3 plus x by 1 minus 2 by 3 into x. तो ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस b हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस b हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx would be 5 by 1 plus 25x square, which will give us beta by alpha as 5. So this is the question.
ओके नेक्स्ट, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं. A triangle ABC a right angle triangle ABC is such that is such that A and B lie on the positive x-axis and y-axis, positive y-axis respectively. Lie on की जगह move on कर दो, क्योंकि locus का question है तो that will be more appropriate. Lie on से they become fixed point. A and B move on positive x-axis and positive y-axis respectively. Find the locus of C. Find the locus of C. Bracket में the triangle is right angled at C. A right angle triangle ABC is such that point A and B lie on the positive x-axis and positive y-axis. Then the locus of C. What would be the locus of C? Options में we have a straight line, circle, parabola, ellipse. चार options है locus के लिए. Straight line, circle, parabola, ellipse. So we have a scenario like this. Suppose this is A, this is B, and this is C. We have a triangle ABC like this, which is right angled at C. So this angle would be 90 degrees. So given that A will always lie on the x-axis, C will always lie on the positive x-axis, we have to find the locus of C. So assume that C is x comma k. ये लेंथ A हो जाएगा, ये लेंथ B होगा, ये लेंथ C होगा. थोड़ा सा अगर और प्रॉपर्ली फिगर बनाएंगे तो
must look more like this. This looks like a pencil. C is H comma K. So considering the nature of the triangle, this line length would be A, this length would be B, this length would be C. Now notice, if we drop a perpendicular from C, and then if we drop a perpendicular from B, so if this is H comma K, this would be H, ये H होगा and this whole length would be K. देखो clear है? So how do you find the value of H and K? So suppose this angle is theta. तो ये हो जाएगा B minus theta. तो H हो जाएगा A cos of B minus theta. Again, now if this angle is theta, so this angle would be 90 minus theta. ये फिर से 90 minus theta, which will make this angle as theta. So K would be like writing B sine of A plus theta. Is everyone okay with this? Is everyone clear with this? H और K का वैल्यू से हाँ सर ठीक है ना? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा. We have to eliminate theta in this. So let's say H would be A cos B sin theta, cos B, cos of A minus B. So cos A cos B plus sin A sin B, which is equal to, acha, what can we say would be the value of cos B in the triangle? ABC is a right angle triangle. Okay, so cos B का वैल्यू क्या हो जाएगा? A by C. A by C. ठीक है, ये 90 है. C is the hypotenuse. So cos B would be, so C cos B would be A. तो ये हो जाएगा A by C cos theta plus sin B. Sin B हो जाएगा B by C sin theta. Okay, so this is like writing A by C into A cos theta plus B sin theta. Okay, अब K के लिए आ जाओ. तो K का था B sin A plus theta, so that will be like B sin A into cos theta plus cos A sin theta. अब फिर से वही वाला फंडा करेंगे. इन द ट्राइंगल व्हाट बी sin A? Sin A would be A by C.
So A by C cos theta plus what would be cos A? Cos A in the triangle would be B by C sin theta. So ये basically है B by C A cos theta plus B by C sin theta. Does everyone follow on this? Yes. Now how do you eliminate theta? दोनों को डिवाइड कर दो तो x by k is equal to a by b आ जाएगा which is like bh is equal to ak. Now what be the locus of bh is equal to ak? This is like y is equal to b by ax. So the locus of c will be a straight line. The answer is the locus is a straight line. Was everyone able to follow the question? The next question. Find the summation r going from 1 to 100 sine inverse of 1 by root over of r square plus 1 into r square plus 2r plus 2 is equal to tan inverse of p by q, and find the value of p plus q. Is summation r going from 1 to 100 sine inverse of 1 by root over of r square plus 1 into root over of r square plus 2r plus 2 is tan inverse of p by q. Find p plus q.
Anyone? Okay, इसको solve करने के लिए we'll do it in this way. Suppose this is like writing sin inverse of 1 by root over of 1 plus r square into root over of 1 plus r plus 1 whole square. Okay. Now the numerator of this can be written as a r plus 1 minus r by root over of 1 plus r square into root over of 1 plus r plus 1 whole square. So this is, so this will be sin inverse of, अब इसको split कर लो. So we'll have a 1 by 1 plus r square root into r plus 1 by root over of 1 plus r plus 1 whole square minus r by root over of 1 plus r square into 1 by root over of 1 plus r plus 1 whole square. Okay. अब इसमें suppose we substitute r as tan theta and r plus 1 as tan phi. तो ये पहला टर्म क्या बन जाएगा? 1 by 1 plus r square 1 by sec theta, ये हो गया cos theta into, अरे ये हो जाएगा sec theta sec phi, तो tan phi by sec phi will be sin phi, माइनस में आ जाएगा. ओके यहाँ पे हो गया sec phi tan theta by sec theta sin theta into ये आ जाएगा 1 by sec phi which is cos phi. Is anyone clear with this part? But then this can be written as sin inverse of sin of phi minus theta. तो sin आ गया, basically आ गया phi minus theta. But what would phi minus theta represent? So phi minus theta would be tan inverse of r plus 1 minus tan inverse r. That is how we simplify this. So अब this will convert to a telescopic sequence. Answer निकल जाएगा. The general term has been expressed as a difference of two entities. Now this thing will behave as a telescopic sequence. So summation of r going from 1 to 100 TR would be the largest term. So largest term इसमें क्या आएगा? R is 100. So tan inverse 101 minus r, the smallest smallest in this case में is 1. So tan inverse 1. अब सिंप्लीफाई कर देंगे. तो tan inverse x minus y will be like tan inverse of x minus y by 1 plus xy. So 1 plus xy 100
You clear your question? So ये simplify हो गया 50, 51. So P plus P is equal to 50, Q is equal to 51. तो इसका आंसर आएगा 101. ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? In fact, you can actually sometimes you can use this as a standard formula, which is sine inverse of x minus y by root over of 1 plus x square into root over of 1 plus y square is tan inverse x minus tan inverse y. It is kind of a standard formula. Okay, next question. Uh, to the vertex of the parabola y square equal to 4ax, two chords are drawn and the circle with the two chords as diameter intersect at a point. If A and B are the angle made by the tangent at the other end of the chord, and C be the angle made by the line joining origin to the point of intersection of the circle, such that cot A plus cot B plus m times tan C is equal to 0, find m, find m.
So let's say we have a parabola y square equal to 4ax and इससे कोई भी दो chord बना लो. Let's suppose this is one of the chords. This is the other chord. इन दोनों पे सर्कल बनेगा. This is their point of intersection. So we take this as P, इसको Q and इसको R. So P can be taken as 81 square comma 281. Q can be taken as 82 square comma 282. Okay. Now the tangent at P makes an angle A. The tangent at Q makes an angle B. That is this is how it is. And the line joining OR will make an angle C. So सबसे पहले तो let's get down to the easier part. Slope of the tangent at P would be at now for a parabola at any point T1. Slope of the tangent is 1 by T1. So 1 by T1 would be the value of tan A, and slope of the tangent at Q would be 1 by T2, which would be the value of tan B. Okay, अब R निकालना है. तो R के लिए equation of the first circle. तो A point origin है. So x into x minus 81 square plus y into y minus 281 is equal to 0. And equation of circle C2 similarly would be x into x minus 82 square plus y into y minus 282 equal to 0. So R के लिए we solve the two circles simultaneously. So x square plus y square minus 81 square x minus 281 y. और यहाँ पे आ गया x square plus y square minus 82 square x minus 282 y is equal to 0. Solving them simultaneously. ये cancel हो गया. We get okay a भी cancel हो जाएगा पूरी equation से. So we'll have t2 square minus t1 square times x is equal to 2t1 minus 2t2 times y. So that still gives us t1 plus t2 into t1 minus t2x is equal to twice of t1 minus t2y. So t1 minus t2 cancel हो जाएगा with a negative sign. That will give us y by x is equal to minus 2. But y by x would basically be the slope of OR. So slope of OR आ जाएगा minus 2. By t1 plus t2. नहीं उल्टा हो गया ना. चेक सॉरी उल्टा हो गया.
y by x would be minus of t1 plus t2 by 2. But t1 is basically cot A, t2 is cot B, so we get twice of tan C is equal to minus of cot A plus cot minus of cot B. तो सबको सेम साइड पे ले लेंगे तो वी गेट n इज इक्वल टू 2. क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. If alpha, beta, gamma be the roots, if alpha, gamma, beta be the roots of x cube minus 2x square Okay, let's continue. So we were doing the question that alpha, beta, gamma be the roots of x cube minus 2x square plus 6x minus 1 is equal to 0. Then find the value of alpha times alpha square plus alpha plus 1 by alpha square minus alpha plus 1 plus beta times beta square plus beta plus 1 by beta square minus beta plus 1 plus gamma times gamma square plus gamma plus 1 by gamma square minus gamma plus 1. If alpha, beta, gamma are the roots, then find the value of this expression.
Okay, method of solving. Let's say we start with alpha square plus alpha plus 1 by alpha square minus alpha plus 1, multiply and divide by alpha minus 1. So alpha minus 1 alpha square plus alpha plus 1 हो जाएगा alpha cube minus 1 डिवाइड बाई नीचे में आ जाएगा alpha cube minus alpha square plus alpha minus alpha square plus alpha and a minus 1. Okay, which is like alpha cube minus 1 divided by alpha cube minus 2 alpha square plus 2 alpha minus 1. But since alpha is a root of this equation, since alpha is a root of x cube minus 2x square plus 6x minus 1 equal to 0. So alpha cube minus 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 alpha square minus 6 alpha, and alpha cube minus 2 alpha square plus 2 alpha minus 1 का वैल्यू would be basically यहाँ पे 2 alpha 6 alpha है तो 2 alpha कर दो तो minus 4 alpha. So this expression would basically be like 2 alpha into alpha minus 3 by minus 4 alpha. So alpha alpha कट गया, 2 कट गया, so it's 3 minus alpha by 2. So अब in an identical way we could say that ये हो जाएगा 3 minus beta by 2, ये हो जाएगा 3 minus gamma by 2. Therefore the entire expression will end up becoming alpha into 3 minus alpha by 2 plus beta into 3 minus beta by 2 plus gamma into 3 minus gamma by 2. Okay, which is 2 taken common. So 3 times of alpha plus beta plus gamma minus of alpha square plus beta square plus gamma square. अब now given that alpha beta gamma other roots, so alpha plus beta plus gamma का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 2. Sum of the roots minus b by a. And how do we get alpha square plus beta square plus gamma square? 2 square minus 2 into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. अरे फॉर्मूला याद रखो ना यार, b square minus 2ac by a square. Sum of the squares is always b square minus 2ac by a square. So b square हो गया 4 minus 2a1c6 by a square, which is 1. Okay, so 4 minus 12 will be a minus 8. अब plug in कर दो. So this would be now 6 plus 8 by 2. सेवन आ जाएगा. Is that okay with this? Okay, next question. If I1 is integral 0 to 1 x to the power 7 by 2 into 1 minus x to the power 9 by 2 divided by 30 dx, and I2 is integral 0 to 1 x to the power 7 by 2 into 1 minus x to the power 9 by 2 whole divided by x plus 5 whole square whole to the power 10, sorry, whole to the power 10 dx, such that
I1 by I2 is equal to 5a cube into root a, where a belongs to natural numbers. Find a. If I1 by I2 can be expressed as 5a cube by root a, find a. Okay, the question would be, the solution of this would be, let's say we start with I2 and I2 ko we write it in this way, 0 to 1 x by x plus 5 whole to the power 7 by 2, 1 minus x by x plus 5 whole to the power 9 by 2, and dx by, अब देखो 7 by 2 plus 9 by 2 would be 16 by 2, which is 8. तो अपने पास x plus 5 का होल स्क्वायर बच गया. Now what we do is put x by x plus 5 as p. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशंट रूल से विल हैव अ x plus 5 minus x by x plus 5 whole square dx is equal to dt, which effectively would be a dx by 5 is this, dt by 5 हो गया.
So I2 will become, and also the limit di है, so as x tends to 0, t will tend to 0, and as x tends to 1, t will tend to 1 by 6. So ये हो गया 0 to 1 by 6, t to the power 7 by 2. Okay, 1 minus x by x plus 5. तो सिंप्लीफाई कर लेना, कर लो फटाफट। तो जैसे 1 माइनस, कर दिया 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 5। 1 माइनस 60 आ जाएगा सर। हाँ 1 माइनस 60 आ जाएगा ये सिंप्लीफाई करके। 1 माइनस 60 to the power 9 by 2 हो गया ये। 1 को अलग कर देंगे, 8 को 10 कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 60 हो गया ये। और टी आएगा, और इसके साथ एडजस्टमेंट के लिए क्या रहेगा, ये तो उसमें चला गया, डी टी बाई 5 हो जाएगा ना यहाँ पे। 1 माइनस 60, यहाँ पे भी 5 आएगा ना, बाई 5। हाँ सर, वहाँ पे भी 5 आएगा। हाँ 1 माइनस 60 बाई 5 आना चाहिए, बस क्या चीज़ चेक करना। So in that case, so I2 would basically end up becoming 1 by 5 to the power 11 by 2 बाहर, t into 7 by 2, 1 minus 60 to the power 9 by 2 dt, going from 0 to 1 by 6। पर the value that we have, अपने को जो I1 से कंपेयर करना है, I1 में वापस 0 to 1 लाना होगा। तो 0 to 1 वापस लाने के लिए let's say we do this, इसमें put 6t as u, so that 1 by 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिमिट वापस से सेट हो जाएगा। तो 60 u से आ जाएगा 6 dt is du, and लिमिट में as t and u, sorry, t and u, so t0 u0, and if t is 1 by 6, so u will become 1। तो इससे क्या लिमिट will go back to 0 to 1 जो I1 के लिए चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो I2 would be 1 by 5 to the power 11 by 2 into लिमिट हो गया 0 to 1। अच्छा, t हो जाएगा u by 6, तो u by 6 whole to the power 7 by 2 into 1 minus 60 हो जाएगा 1 minus u to the power 9 by 2, and एक du में आ जाएगा एक और 6, तो du by 6। So this will end up becoming 1 by 5 to the power 11 by 2 into 6 to the power 9 by 2 into integral 0 to 1 u to the power 7 by 2 into 1 minus u to the power 9 by 2 du, which is I1। So I1 by I2 will be 5 to the power 11 by 2 into 6 to the power 9 by 2। अब इसको कंबाइन कर लो, तो हो गया 5 into 30 to the power 11 by 2, which is
5 into 5 to the power 9 by 2 है ना, 5 to the power 9 by 2 which is 30 cube into root 30. So a का value is 30. तो क्यूब कैसे 4 होगा ना पावर? क्या चीज? 30 पावर 4 होगा ना? 30 पावर 4 क्यों होगा? 9 by 2 है ना, 11 by 2 ही नहीं है वो, 9 by 2 होगा। 5 एक बाहर निकालिए ना, तो यहाँ पे 9 by 2 होगा। 5 एक बाहर लगा निकालिया एंड देन 5 और 6 को क्लब कर दिया तो 30 टू द पावर 9 by 2। अच्छा 9 by 2, हाँ 9 by 2 है ना। तो और I1 का एक 30 डिवाइड भी तो करेंगे, 7 अच्छा बाई हाँ टू हो I1 का, जाएगा। हाँ I1 में भी तो एक 30 है, राइट, I1 में भी एक 30 है। I1 का भी एक बाई 30 आ जाएगा, सही बात है। तो ये होगा I1 का 30। Okay, so next question. Next question. Suppose simple question नहीं है. Suppose we have a matrix A, which is Aij 2 cross 2, where Aij belongs to the set 2 and 3. So the elements are in the are either 2 or 3. Now, if data is positive, it is given that data is positive, data is greater than equal to 0, sorry. If data is greater than equal to 0, then the probability, find the probability that A is invertible. Find the probability that A is invertible. Find the probability that A is invertible.
2/5. कितना? 2/5. यार the answer is 5/11. Probability of A being invertible is 5/11. So A would be basically A, B, C, D. Okay. So A can take two values, B can take two values, C can take two values, D can take two values. So the total number of matrices that we can create would be 16. Okay. But out of these 16 matrices, how many will be negative? 5. 5 नेगेटिव होगा ना. देख पहले तो देखो नॉन इन्वर्टेबल के लिए क्या कंडीशन है, डेटा 0 होना चाहिए. इज नॉन इन्वर्टेबल. तो अब कितना ऐसा होगा जो नॉन इन्वर्टेबल है? तो या तो ऑल द 4 एलिमेंट्स आर द सेम, तो डेटा 0 हो जाएगा. ऐसा दो मैट्रिक्स बनेगा. ये या फिर वी हैव 2 2 3 3 इस टाइप का. 4 बनेगा. इस तरह का 4 बनेगा. यू नो लाइक टू रो इंटरचेंज कर दिया, 2 2 कॉलम में आ गया, 3 3 कॉलम में आ गया, वैसे करके. तो 6 विल बी नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिसेस. बचा 10 मैट्रिसेस. तो जो 10 बचे हुए मैट्रिसेस हैं उनमें डेटे पॉजिटिव कितनों का होगा? 5 का डेट पॉजिटिव होगा और 5 का डेट नेगेटिव होगा. सिमेट्रिक पेयर एक रो इंटरचेंज कर दिया, एक कॉलम इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बिकम नेगेटिव. तो 10 मैट्रिसेस में 5 पॉजिटिव होंगे और उनके सिमेट्रिक पेयर 5 नेगेटिव होंगे. ठीक है. बट वी हैव टू कंसिडर द डिटरमिनेंट जिसमें डेट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस वुड बी 11 नॉट 16 and favorable cases will be 5. So probability of A is 5/11. जो नेगेटिव है वो तो लेना ही नहीं है ना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 5 लेंगे ही नहीं. ये 6 नॉन इन्वर्टेबल है तो ये एन में नहीं आएंगे. तो विल हैव 5 पॉजिटिव डिटर्मिनेंट जिनका इन्वर्जन इज पॉसिबल. ठीक है ना. The next question. Limit n tending to infinity log of nth root of 4/n square plus log of nth root of 16/n square plus log of fourth root of 36/n square nth root of dot 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 going up till ln fourth root of 4. Find the value of this nth root of 4, sorry, not this.
फोर्थ रूट nth रूट, सारा nth रूट है। इजी से क्वेश्चन है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ वुड बी सिंप्लीफाई दिस। ये बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, रूट सबका बाहर आ गया एज 1/n, और समेशन में आ जाएगा ln ऑफ 2n/n स्क्वायर 2r, एक्चुअली 2r/n स्क्वायर, 2r² स्क्वायर 2r होल स्क्वायर n स्क्वायर, टू आर स्क्वायर, तो 4r² n स्क्वायर। तो अब जैसे जनरल में करते हैं, वी प्लग इन r/n एज x, तो और ये जाएगा r गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो चेंजेस टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 log ऑफ 4x² dx, which is 0 to 1 log 4 dx plus twice of integral 0 to 1 log x dx। अच्छा, 0 to 1 log x dx ये तो मैं लिखाया था क्लास में। 0 to 1 log x dx, ये वाला रीजन का एरिया कितना होता है? 1 यूनिट। 1 इसका एरिया 1 यूनिट होता है, तो नेगेटिव साइड पे है तो वैल्यू -1 हो जाएगा। नो नीड टू सॉल्व, so this will be 2 log 2 minus 2, that will be the answer। 0 to 1 log का एरिया इज 1 -1, एरिया इज 1, डी में -1 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए के बी द एरिया बाउंडेड बाय y equal to kx plus k with the parabola y y, अच्छा y equal to x square,
with y equal to x square, where k belongs to R plus, and find limit k tending to infinity ak by k cube. AK be the area bounded by y equal to kx plus k with y equal to x square, where k is a positive real number. Find the limit of ak by k cube, k tending to infinity. वन बाय थ्री। सर ये एरिया कौन सा बताना है, पैराबोला के अंदर वाला या पैराबोला के नीचे वाला? एरिया बाउंडेड है ना, एक तो एक ही एरिया आएगा। एरिया बाउंडेड बिटवीन, हाँ मतलब बाई दिस विद दिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपना अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया, एंड y इक्वल टू kx प्लस k विल बी अ लाइन लाइक दिस, पॉजिटिव स्लोप। तो ये वाला एरिया ही होगा ना ऑब्वियसली। तो काफी मतलब सिंपल क्वेश्चन है तो विल सॉल्व इट विद द वर्टिकल स्ट्रिप। तो एरिया आ जाएगा, तो पहले तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। इसका रूट होगा x1 एंड x2। तो ये आएगा x2, ये आएगा x1, एंड ये एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया वुड बी इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम x1 टू x2, ऊपर में है kx प्लस k माइनस एक्स स्क्वायर dx will be kx square by 2 plus kx minus x cube by 3 going from x1 to x2. So this is k by 2 into x2 square minus x1 square plus k times x2 minus x1 minus of x2 cube minus x1 cube by 3. तो यार तो ऐसे क्या रह गया, क्या did you use something else? सर उस समय गलत कर दिया था, अभी 1/6 आ रहा है। हाँ ओके। तो इसमें बेसिकली अपने को तो खाली के क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है क्वेश्चन में। तो जहाँ पे भी के क्यूब नहीं आएगा यू कैन इग्नोर दोज टर्म्स, खाली के क्यूब का कोएफिशिएंट निकाल के हो जाएगा। तो k बाई 2 यहाँ पे ये आ गया x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस k टाइम्स x2 माइनस x1, एंड ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो x2 माइनस x1 होल इंटू x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर प्लस x1 x2 बाई 3। x1 x2 would be minus k, and x1 minus x2 is minus d by a. Difference of the roots is root d by a, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ d k स्क्वायर
प्लस 4k और यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो। तो x1 प्लस x2 इसके, और ये हो गया k स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस k बाई 2 प्लस k इंटू रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k माइनस में ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस 4k इंटू x1 प्लस x2 स्क्वायर, x1 प्लस सर बट x2। एक एक वैल्यू तो बहुत बड़ा आएगा, जैसे x2 का वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा एंड x1 बहुत छोटा रहेगा, तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेटली x2 क्यों नहीं लिख रहे थे, x2 माइनस x1 को। मतलब ठीक है, ऐसे डायरेक्टली हो ही रहे तो क्या लोड है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac तो प्लस 2k, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k बाई 3। तो अब खाली अपने को तो के क्यूब का कोफिशिएंट भी तो चाहिए ना। जैसे फर्स्ट टर्म में के क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, इफेक्टिव के क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया, हाफ। इसमें कोई के क्यूब है नहीं, और इसमें के क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो -1/3। तो 1/2 -1/3 विल गिव अस -1/6, 1/6। तो लिमिट वाइज, ठीक है, लिमिट वाइज अपने को कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, सॉरी के क्यूब चाहिए। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, खाली के क्यूब का कोफिशिएंट निकाल लो, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कोफिशिएंट द हाईएस्ट पावर। नीचे में पावर के क्यूब है, तो ऊपर भी के क्यूब का ही चाहिए। के क्यूब यहाँ पे हाफ और -1/3 के 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नो नीड टू सिंप्लीफाई, खाली के क्यूब का कोफिशिएंट निकालने से ही काम हो जाएगा। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर टुडे। समेशन ओमेगा गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वेयर प्लस 2 ओमेगा प्लस रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वेयर माइनस 1। 1 to infinity sin inverse of 2 omega plus 1 divided by omega omega plus 1 plus omega square plus 2 omega plus omega square minus root over of omega square minus 1. Find the value of this.
ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अंदर वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दो. लेट्स स्टार्ट विद द बाय रैशनलाइजिंग दिस. So we'll have sin inverse of 2 omega plus 1 into root over of omega square plus 2 omega minus root over of omega square minus 1 whole divided by omega into omega plus 1. और इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो विल हैव ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ कट जाएगा एंड 2 ओमेगा प्लस 1 2 ओमेगा प्लस 1 यहाँ कट जाएगा. तो विल हैव साइन इनवर्स ऑफ, ओके, अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के लिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा कैन बी रिटन एज रूट ओवर ऑफ ओमेगा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 minus root over of omega square 1 by omega into omega plus 1. ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर दो. So this would be like writing sin inverse of 1 by omega into root over of 1 minus 1 by omega plus 1 whole square minus 1 by omega plus 1 into root over of 1 minus 1 by omega square. Now ये फॉर्म क्या बन गया? टेलीस्कोपिंग. Sin inverse of x into root over of 1 minus y square minus y into root over of x minus y square. So sin inverse of x minus y हो गया. Sin inverse of x minus sin inverse of y, which now is in the form of a telescopic series. तो ये आ जाएगा 1 by omega minus 1 by omega plus 1. Since it's a telescopic series, so how do we write down the value of x infinity? So the smallest term, what will be the smallest term in this? When omega is infinity, so 1 by omega will become 0. So पहला term आ जाएगा sin 0. And the largest term in this, अरे largest term तो when omega is 1 होगा तब होगा ना. Omega is 1, so 1 by omega will be the maximum. So sin inverse will be maximum. तो इधर से पाई बाई 2 आएगा और इधर से साइन ये 0 आएगा. हाँ ठीक है. तो s infinity would be pi by 2. Clear everyone? Okay. So we'll stop at this for today. Okay. Now after some time I'll share a sheet, a problem sheet, you know, एक advanced level का problem sheet I'll share, which we will discuss on let's say Sunday evening. ठीक है, Sunday evening को discuss करेंगे, a problem sheet that I'm going to share. Okay. So then till then पढ़ते रहो यार, and if you have any doubts in between, please do send me. Okay, we can have a one-on-one doubt sessions as well for problem solving. कोई issue नहीं है. So if you have any kind of help that you need, please do reach out. ठीक है ना? पढ़ते रहो. All the very best to everyone. Advance is the focus. ठीक है? I know all of you have done very well in the mains exam, but do advance is the main goal. ठीक है? That's the end game. पढ़ते रहो अच्छे से. Keep practicing. Keep taking mock tests as well, so that 6 घंटे एक साथ बैठने का वो रहे. ठीक है, चलो बाय एवरीवन. I'll see you on Sunday. I'll share a sheet in a little while. Okay, take care till then. Thank you, sir. So